स्टूडेंट्स अज आप करांगे डायोसन बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्लास 4th का क्वेश्चन पेपर है जी फस्ट टर्म का। ठीक है, सबजैक्ट हैगा जरनल साइंस, मैक्सीमम मार्क्स है 80। सब तो पहला ये हैगा वा चूज द करैक्ट ऑप्शंस। हाउ मैनी मिल्क टीथ डज आ चाइल्ड हैव? 20। इसका आंसर हैगा 20। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? फोर्स। Which of the following is not a type of force? Running. In which part of the tooth are blood vessels and nerves present? Pulp. Which of the following is not a lubricant? Sand. Fill in the blanks. ठीक है, ये ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਆਣੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ, ਇਹ ਵੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ। We must brush our teeth dash a day. Twice. Cars and trucks have wheels to dash friction. Reduce. Eating dash and dash make our gums and teeth strong. Fruits and vegetables. Friction is dash on a rough surface. More. Force cannot change the dash of an object. Mass. ओके, नेक्स्ट हैगा वा थर्ड हैगे ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स से। ग्रूव्स इन द टायर्स causes skidding of the vehicles. Fruit fall from tree due to the force of friction. False. Sweets and chocolates spoil our teeth. True. Skating is easier on ice than on grass. True. Knives are cracking teeth. False. नेक्स्ट हैगा मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स दी आ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਟੀਥ ਇਨ ਸੀਜ਼ਰਸ। ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦਾ ਬੀ ਲੈਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਰਫ ਸਰਫੇਸ, ਡੀ ਮੋਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। पुश और पुल, सी फोर्स। ते मॉलर्स, ए ग्रीनिंग टीथ। नेक्स्ट है जी डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट डिफाइन हैगी लुब्रिकेंट, अ सब्सटेंस दैट मेक्स सरफेस स्मूथ। फ्रिक्शन, हाँ जी। नेक्स्ट है फ्रिक्शन, force acting along the two surfaces in contact. Muscular force acting along the muscles to do work. आगे हैगा एनिमल, outer white covering of the tooth. नेक्स्ट हैगा जी सैक्शन बी। ਇਹ ਹੈਗੇ 2.4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 4 ਸੀਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਹੈਗੀਆਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫॉलोइंग इन शॉर्ट, डू एनी 5, 2 मार्क्स का ईच है। ठीक है, फर्स्ट हैगा व्हाट इज मींट बाय फोर्स? फोर्स a pull or a push on an object. Why does a bicycle slow down when we stop pedaling? It happens due to force of friction. Why should we brush our teeth properly? To prevent tooth decay. Name the types of force. Gravitational force, frictional force, muscular force and magnetic force. How does friction affect our daily life? We can walk, we can write with the pencil, on paper with the pencil. We can erase pencil marks. Vehicles move on road. Why are teeth important for us? Teeth are important for us to bite and chew the food. Next हैगा 7th, answer in details। ठीक है, do any 3। Priya eat so many ice creams, why will happen to her teeth?
if she does not brush them regularly and why? ठीक है, her teeth will get spoiled. नेक्स्ट हैगा वा लिस्ट 5 यूजेस ऑफ फ्रिक्शन. लिस्ट 5 यूजेस ऑफ फ्रिक्शन. Vehicles move on road and we can write on paper with a pencil. We can erase pencil marks. We can walk on road due to friction. Skating is easier on ice than on grass. Give a reason. Because it is because ice reduces the friction. Next, what is the difference between the gravitational force and frictional force? Gravitational force is the force that pull every object downwards towards the earth. And frictional force acting along the two surfaces in contact that opposes the moving one object over the other. Okay, next है think and answer. What will happen when gravitational force is not there on earth? If there is no gravitational force, we will float on earth. Why is it difficult to walk on a wet surface than on a dry surface? It is because friction is less on a wet surface and more on a dry surface. Okay. Next आई सीगी डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ठीक है, कितने दी डायग्राम. ओके, ये सीगी ये दी डायग्राम आई स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ओके, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नैक्सट न्यू वीडियो दे नाल.